फ्युचर जनरली हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड 9 महिन्यानंतर डिलिव्हरी कव्हर देणारी, क्लेम न घेतल्यास पुढील हप्त्यास 80% डिस्काउंट देणारी, कमीत कमी हप्त्यात जास्तीत जास्त सुविधा देणारी, त्याचबरोबर सासवड, जेजुरी, पुणे येथील सर्व नामांकित हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधा देणारी एकमेव कंपनी. अधिक माहितीसाठी संपर्क शेवते इन्शुरन्स 98 22 32 68 44. I'm insisting my colleague from Lakshadweep, Mr. Bharat. In fact, we jointly meet Prime Minister today. There are a number of issues which people from Lakshadweep are facing, and Mr. Bharat, he was continuously discussing with us and raising all these issues. And it was his request that Lakshadweep is a centrally administered area, and that's why letters were went to the notice of the Prime Minister. And that's why Bhutan Hussain, he has raised certain issues to the Prime Minister. I think it is better that he should brief about what exactly he said about Lakshadweep. Mr. Bharat. Thank you so much, sir. Lakshadweep being a central ruled area, after the new administrator giving additional charge, Mr. Praful Patel, he is posted as administrator since 2006 in Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu, and in Lakshadweep in 2020 after the demise of Tanisha Sharma. So after Mr. Praful Patel administrator taking additional charge of Lakshadweep, Lakshadweep, One second, Praful Patel of administrator, yes, sir. not other Praful. Praful Patel, Mr. Praful K. Patel, administrator. He was the Home Minister of Gujarat earlier when Mr. Prime Minister Modi ji was the Chief Minister there. So once he took the charge of administrator of Lakshadweep, so Lakshadweep started witnessing many issues in all the sectors, especially in the field of health, in the field of transportation, in the field of education, in the field of human resources, and even to the extent that the land of the people of Lakshadweep, where people even started living there from the 13th century, that land belongs to the people of Lakshadweep, were also trying to be acquired without the consent of the people of Lakshadweep. So these issues we being continued for the last 15 months. So I have been requesting my national president Pawar Saab that this issue to be flagged to the Prime Minister, and we need to arrive at a conclusion that the people of Lakshadweep are in great distress. To cite some of the examples, two major issues which we are facing now in Lakshadweep is, you know that Lakshadweep is a place where there is no much scope of any private entrepreneur or private job opportunity as of now. Now the most of the jobs related to the people are connected to the government jobs, starting from the doctors to the Safai Karmachari of Panchayat. So after Mr. Patel joining Lakshadweep, by now he have retrenched nearly 2,400 employees, both contract and casual laborers, which includes, I said, doctors to the Safai Karmachari, which alone has taken away nearly 2.5 crores of rupees from the economic circle of Lakshadweep in a month. So one can imagine a place like Lakshadweep where its total population is just 70,000, where there is no scope for any private employment. So 2,400 people, that too amidst of the pandemic situation, when the Prime Minister's order was there, no such retrenchment should happen in the pandemic situation. At this time, nearly 2,400 people
have retrenched from the job, which has affected our economy very badly, and people, which directly affects the shopkeepers, and for the any purpose people would depend the economic circle. Say 2.5 crores going away from the economic circle in a month, it really affects the people's livelihood in Lakshadweep. That is number one. Number two, Lakshadweep's land, entire land belongs to the people of Lakshadweep. So the regulation also says the same thing. But Mr. Patel, after coming in, he started declaring new projects, which he stopped all the ongoing projects and new projects declared. And all these projects was trying to be implemented in private lands, people's land, without their consent. And to the extent of land he has notified is around 52 lakh square kilometer. You know, the total land mass of Lakshadweep is 32.2 square kilometer. And from that, 52,000 lakh square meter land, which is around 120 acres of land, is being notified without any caudal formalities of the Land Acquisition Rehabilitation Act 2013. And for any development in Lakshadweep, the development of Lakshadweep, the Bible is the Integrated Island Management Plan, which is notified by Government of India with the recommendation of the Supreme Court. That is the Bible of any development. So for any such land acquisition process, the consent of the panchayat, local panchayat, is compulsory, where the Gram Sabha has to take the consent of it. So far, no such action has been done from the side of administration, and unilaterally administration went on notifying for acquiring these land without observing any caudal formality. This really had a fear in the mind of the people of Lakshadweep that they have very limited land. What is the guarantee that one fine morning all their property would be grabbed by in the name of development? This was the real fear of the people of Lakshadweep. And apart from that, the closure of agriculture department, closure of veterinary department, there is no veterinary doctors. Even to consult, even for doctors in the medical field, they have to travel from one island to another island, where in the previous year we had doctors of dental doctors in all the islands. Now they have to travel, minimized from 10 to 5, they have to travel from one island to other island. The situation, one referral hospital we had in Agati, Rajiv Gandhi Specialty Hospital, that hospital has been minimized to a non-referral hospital. Not such, practical surgeries are happening now. It is on a very minimal structure. So everywhere, Lakshadweep people are into a great distress. So this was, people's sufferings for the last 15 months. So I have been discussing with my leader Pawar Saab to raise this issue with the Honorable Prime Minister, so that he would be the final person to take a call on that. On that, today with my leader Pawar Saab, I met the Prime Minister and apprised all these issues to him. What was his reaction? His reaction was he had given me a very patient listening, that I feel that he will definitely intervene into all these issues. That is what I expect. I'll give to the host. Is a question on this subject? Sir, anything else that you discussed with the Prime Minister? How long was the meeting with the Prime No, Minister? I'm asking about him. What he says about Lakshadweep. If he wants to ask any question about Lakshadweep. Sir, what did you tell the Prime Minister about Lakshadweep, and what was the Prime Minister's response? You see, we have discussed what he discussed. That is, he himself discussed. I was present. And secondly, my discussion was limited. Because I have, in fact, my visit was mainly for Lakshadweep issue. But when I get opportunity to read, one problem which Maharashtra is facing, that definitely I have raised, and that is, for the last 2.5 years, there were 12 legislative councils members' seats are vacant. These seats are
governance nominee. Maharashtra government has submitted this to Honorable Governor 2 years back, 2.5 years back. Cabinet approval is there. And that 12% list is pending with Honorable Governor Maharashtra for last 2.5 years. And that's why all these posts are vacant. So I just brought to the notice of Honorable Prime Minister that it's not fair. Legislative government not even right to recommend. Government has recommended. It is the duty of the governor to give clearance. But last 2.5 years, he could not find the time to give clearance for this purpose. And that's why all these posts are vacant. Maharashtra, your party is raising issue of the misuse of central agency in the Maharashtra state. Have you discussed anything regarding the same with Prime Minister? No, I have not discussed that subject. I just brought to the notice of Honorable Prime Minister only one case. And that case belongs to journalist. And his name is Sanjay Raut. Sanjay Raut is a Rajya Sabha member, but he is the editor of one of the leading newspapers. And yesterday, we got the information his own apartment, flat, and his land, that land is half an acre near Aligarh. So I think these two properties are attached by this agency. So we just brought to the notice. He's a Rajya Sabha member, he's the editor of the newspaper, and such a small property, I don't know what basis action was taken about him. And that I definitely brought to the notice of Honorable Prime Minister. Sir, do you also feel that this is a misuse of the central agencies? सर प्रधानमंत्री से आज आपने क्या क्या बातचीत की एक बार हिंदी में बता संजय राउत का मैंने एक ही बात मैंने की कि जैसे मैंने कहा वैसे दो बातें की। एक, पिछले 2-2.5 सालों से महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल ने governors nominee 12 seats which state government has recommended to Honorable Governor. The Governor has not acted, and that's why these 12 seats are vacant for the last 2.5 years. So I just brought to ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। दूसरी बात ये थी कि संजय राउत राज्यसभा के मेरे कलीग सामना के संपादक एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनकी आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है, और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। बस राज्यपाल नियुक्त 12 विधायकों के बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना है? क्या उम्मीद है आपको कि इस मीटिंग के बाद वो नियुक्ति हो जाएगी? हमने उनके कारण ये दोनों इश्यू हमने उनके कान पर डाला, उनकी रिएक्शन हमें होती नहीं। मैं इतना ही सोचता हूँ कि इसे सीरियसली वो सोचेंगे और कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। Sir, it is not only Mr. Sanjay Raut, even your own party man, Mr. Nawab Malik is inside. Do you raise that issue, or is No, it I have not. a pattern only? No, that- Mr. Sanjay Raut. That issue I have not said. Sir, do you also feel There are, Nawab Malik is not only one. There are many. But that we will discuss in Bombay, we will discuss with government, we will collect the latest information, and then we will decide what to do. Sir, do you also
also feel that there is a misuse of central agencies, as everyone is saying in Maharashtra, all the Mahavikas Aghadi leaders? नहीं, सीधी बात है, एक ही केस देखिए ना, संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? Just because he is looking some certain, because sometimes he right, sometimes he criticize. संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, आपको लगता है केंद्र तो जिम्मेदार है सर इसको, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं? सेंट्रल एजेंसी ने ये कदम उठाया है, ये एक्शन सेंट्रल एजेंसी के, और जब सेंट्रल एजेंसी इस तरह से कदम उठाती है, एक्शन लेती है, तो इनकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन किरीट सोमैया जैसे लीडर जो है वो दिल्ली में आती ही रहते हैं सर। ठीक है, There is a feeling within the MPA that the stability issue is not there, and always there is a question mark about whether the Congress, the NCP, and the Shiv Sena will be together. In this context, your Prime Minister. in fact, that's these type of questions I am answering for the last 2.5 years. Nothing will done. There is a stable government. Government will complete its tenure, and this government, in next election, will go collectively, and again they will get same position. Congress always feels miffed and annoyed with Mahavikas Aghadi's other partners. Yesterday also they met Sonia Gandhi and they somewhere raised their concerns about the same. It's like NCP and Sena going together but keeping Congress aside. Do you somewhere? ये सरकार तीनों पार्टी का है, इनमें से एक पार्टी डिस्टर्ब हो जाएगी तो सरकार चल नहीं सकता, और सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनमें इतनी समझदारी है कि वो किसी पार्टनर को नाराज करके राज नहीं चलाएंगे। आज तक हमने कांग्रेस का ऐसी शिकायत है ऐसे कभी सुने नहीं। हाँ, अखबार में पढ़ी, मगर 1 to 1 हम बैठे हैं तो कभी इशू रेज नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के साथ आपकी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता का बयान आया है, उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ हमारी जितनी कटुता है उतनी एनसीपी के साथ नहीं है। ठीक है भाई, किसी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, मगर हमारी क्लियर कट थिंकिंग है कि बीजेपी के साथ हम किसी के कोई रिश्ते नहीं लेंगे। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर बीजेपी के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उठाएंगे। लेकिन बीजेपी ये भी कर रही है सर कि सेंट्रल एजेंसीज है वो मातोश्री तक पहुंच गए हैं, इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा बीजेपी कहती है। मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं, पर मैंने प्राइम मिनिस्टर को किसी मीटिंग की, ये बात मैंने आपको बताई। पवार साहब यूपीए के अध्यक्ष बनने को लेके काफी सारी अटकलें पहले भी लगाई गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी ये जिसे कहते हैं कि एक मौका आपसे भी पूछा गया था बट आपने ऑफर टर्न डाउन कर दिया। कितनी सच हैं ये खबरें? बिल्कुल, एक तो मैंने और मेरी पार्टी की लाइन यूपीए की चेयरमैनशिप हम लोग मांग रहे, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं। मेरा पर्सनल ये कहना है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूँ, कि मैंने कई बार कहा है। हाँ, कुछ लोग पार्टी में कहते हैं कि आप जिम्मेदारी ले लो, but that's not possible for me, and that's why, and secondly, we don't want to disturb present setup. सर आपने कहा इंटरेस्टेड नहीं, कोल्हापुर में भी आपने कहा था, लेकिन दूसरा चेहरा कौन है यूपीए के अध्यक्ष के लिए? आज है ना, आज जो है तो इसको किसने कहा, उन्होंने इस्तीफा दिया। आवाजी चुनाव नजदीक आ रहा है तो आप लोगों में भी आपस में चर्चा हुई होगी अगर सहयोगी दलों से एनसीपी और कांग्रेस पार्टी और सब कौन हो सकता है चेहरा? आपने बातचीत हुई? मेरी बात अच्छी है कि हम नॉन बीजेपी जो देश में इम्पोर्टेंट पार्टीज है, इनकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए, इस तरह का सुझाव पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने किया। ममता जी हैज रिटन टू मी एंड शी एक्सपेक्ट दैट आई शुड कॉन्टैक्ट मोस्ट ऑफ द लीडर्स अदर देन बीजेपी एंड वी शुड कॉल अ मीटिंग ऑफ नॉन बीजेपी लीडर्स
and discuss what should be the future course of action. So I am going to contact them. प्रधानमंत्री ने संजय राउत जी के मुद्दे पर क्या कहा है? कुछ नहीं, हमने उनके काम पर बात की, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कुछ जवाब देना। और सर, संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के नेता ने संपर्क किया था और कहा था कि अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो आपके घर केंद्रीय एजेंसियों का छापा पड़ेगा, और वो हो रहा है ये। ठीक है, मैंने बताया कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं। मैंने 2 दिन पहले आई वॉज इन प्लेस कॉल्ड कोल्हापुर, एंड कोल्हापुर में मैंने दूसरे दिन अखबार में स्टेटमेंट देखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट उनका स्टेटमेंट था। वहाँ एक बाई इलेक्शन चालू है, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो शायद ईडी आपके घर आ सकती है। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री पाटिल उन्होंने कोल्हापुर में 3 दिन पहले किया। You tell this to the Prime Minister? No. Sir, I just want to know your former party has now become, is virtually getting into a position of where leader after leader is vacating in the Congress party. Most leaders are leaving it. Do you see any hope of any opposition space? Is that eroding? Or do you, what exactly do you feel is the future for the Congress party? No, I don't think what we say is that it is situation. In fact, in Congress, there might be some discussion, there might be some suggestion, but the intention behind of this section, these people, they may be also, their total approach is how to strengthen party, and from that angle they are discussing. But do you see there is a hope because you also tried and you couldn't succeed, then you started your NCP? No, basically, those who are suggesting, they want to build the party. Not only that, but they want like-minded forces to come together, and that's what they are discussing. सर, Is there a possibility of you going back to the Congress party? I don't know why you are asking this type of question. Who authorized? I'm leading one political party. You got to be right at the journalist paper question, but not this type of English question. सर, आज प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद आपको लगता है सेंट्रल एजेंसीज में बदलाव आ सकता है या बीजेपी लीडर में बदलाव आ सकता है आगे? हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हमारी ड्यूटी थी कि एक जर्नलिस्ट और पार्लियामेंट के मेम्बर पर इंडस्ट्रीज हो रहा है, वो इनके काम पर जाने की ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, वो हमने पूरी की। ये आगे क्या होगा, क्या कदम उठाएगी, देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र बहुत लंबी है। मालूम नहीं कौन से लीडर, अब ये लीडर की लिस्ट आपके पास होगी तो आप पूरी दीजिए। सर, महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि संजय राउत की और कल से आंदोलन भी चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा? मैं अकेला नहीं बता सकूँगा, कल ये परसों पार्लियामेंट जब सेशन खत्म होगा तब आई गो बैक एंड दिस विल बी कलेक्टिव डिस्कशन। सर, उद्धव जी से आपकी बात हो गई है इस टॉपिक पे? नहीं। बात करेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, कल जाने के बाद करती। ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है सर आपकी पार्टी और कांग्रेस और विरोधी की पार्टी की, उसको कोई खतरा नहीं, वो चलती रहेगी, उसमें तीनों लोग एक साथ हैं? बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं, ये सरकार चलेगी और आगे के चुनाव जब आएंगे 2.5 साल के बाद फिर वापस आएगी। सर, जिस तरह से कांग्रेस का हाल अभी फिलहाल है, 32 या 33 सीट बचे इनके राज्यसभा में, 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक ही राज्यसभा का एमपी नहीं है। आने वाले 2 साल में जो चुनाव, आपको क्या लगता है कि जो मुख्य विपक्षी भूमिका कौन सी पार्टी निभा सकती है? क्या वो कांग्रेस होगी? अभी देखेंगे ना नंबर क्या है, किसके पास है, कितना। आज भी कांग्रेस के पास ज़्यादा नंबर है, तो जब तक ज़्यादा मेंबर है तब तक दूसरी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, महाराष्ट्र में किसान नेता राजू शेट्टी आपके साथ थे, अभी आपके साथ वो नहीं है, कल से, कल घोषणा की। वो कई दिनों से करते थे, आगे में कई ने पिछले सालों से उनका अफसोस ये था। Sir, did you have a conversation about fuel hike and the common man that is suffering with the inflation?
nation, all across there are protests that is happening by your party. As I told you, only two issues I discussed. They are left nothing. सर महाराष्ट्र के कैबिनेट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ऐसी चर्चा शुरू है, ऐसा कुछ? ये कैबिनेट चेंज पॉलिटिकल पार्टी का कैबिनेट है। इनमें से एक पार्टी की स्थिति मुझे मालूम है। जहाँ तक एनसीपी है, एनसीपी में कोई चेंजेस की पोजिशन नहीं है। हाँ, वहाँ वैकेंसीज है, वैकेंसीज के बारे में स्टेट प्रेसिडेंट और पार्टी लीडर इनके साथ बातचीत करके हम उचित टाइम पर कुछ कदम उठाएंगे। Sir, a lot of communal issues are going on in the country, whether it is about the Karoli incident or the Gorakhpur incident. Sir, what is your take over that, sir? As I said, today's my visit was limited to two issues, and other than a single issue I have discussed. What we are raising, these are the issues which we have to take collective stand, and in collective stand, all regional parties and parties like Congress, everybody has to take in confidence. That process we want to return as early as possible. सर, फ्यूल प्राइस हाइक के संबंध में अपोजिशन ने वॉकआउट किया। आपको लगता नहीं कि लाइक माइंडेड पार्टीज को एक साथ सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हाइक जो है लगातार जारी है सब कुछ? ये जो ममता जी ने हमें लिखा है, ममता जी ने लिखा है, ये सेंट्रल एजेंसी की बात है, और इससे भी ज़्यादा राइजिंग प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, एंड द प्रॉब्लम विच कॉमन मैन इज फेसिंग because of rising prices and unemployment and few other issues. So we should discuss and talk out the common program. That program will be decided in this meeting. So would you like to respond on Sri Lanka's financial era, the way the country is going through right now, instability, and also Pakistan? Unfortunately, what is happening there, Sri Lanka is a neighbor. We always keep in contact with them. If something is happening there, it affects us in certain part of southern part of India, particularly Tamil Nadu and others. And that's why definitely we are worried. We hope the efforts of central government to help Sri Lankan government in this situation is a correct effort, and we don't offer we support that. In Pakistan, difficult to say anything. Don't know what will happen. Looks like it will take 2-3 months. And if really the process of election can take for 3 months, in 3 months, probably there might be different situation. We have to wait and watch. सर, कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर आपने केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया था इससे पहले, लेकिन अभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसे लीडर बोल रहे हैं मस्जिदों के ऊपर जो स्पीकर्स है वो हटाए और हनुमान चालीसा शुरू की जाए वहाँ पे। नहीं, राज ठाकरे जी क्या बोलते हैं इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर आज देश में भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर देश के राज चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कई राज्यों में उनकी हुकूमत है। राज ठाकरे ने जो प्रोग्राम लिया, इस प्रोग्राम को बीजेपी ने सपोर्ट करने की नीति वहाँ अनाउंस की और बीजेपी के कार्य इसमें शामिल हो रहा है। ये बात देश के लिए, समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। सर, 19 के इलेक्शन में राज ठाकरे आपके साथ क्या ऐसा क्या बदलाव आ गया? राज ठाकरे अभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ ये भी सच नहीं, मगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बातें की थी और लोगों को कहा था कि चाहे कांग्रेस को या चाहे एनसीपी को वोट देना हो तो आप सोच सकते हैं, मगर बीजेपी को नहीं देना। ये उनकी लाइन थी। आज कुछ बदलाव आ गया, तो क्यों आ गया मैं जानता नहीं। Sir, on agriculture front in Ukraine, with the fertilizer prices going to be increased, how do you view what will happen in terms of production? By and large, overall situation the agricultural production की है,
देश की कंफर्टेबल है, स्टॉक पोजीशन अच्छी है, मगर फर्टिलाइजर के प्राइसेस जिस तरह से हो रहा है इससे आगे कुछ होने में शायद किसानों को फर्टिलाइजर का आइडल शॉर्टेज और ज़्यादा कीमत यह समस्या उनके सामने आएगी। इसीलिए कल महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनसे डिटेल बात उन्होंने की और मेरे बाद उनके भारत सरकार के कंसर्न मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी। अल्टीमेटली मीटिंग में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो मीटिंग के बाद वापस गए, मगर इस पर स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है। yesterday you also met क्या ऐसा कारण है कि सरकार ना फ्यूल प्राइसेस पे डिस्कशन कर रही है दोनों हाउसेस में, ना एसेंशियल मेडिसिन के प्राइस में इंक्रीज हो उस पर डिस्कशन कर रही है? नहीं, इसलिए जो लोगों की समस्या है इस पर डिस्कशन करने की सरकार की कभी तैयारी होती नहीं। मुझे याद है कि ये सबसे मैं देखता था 10 साल देश के पार्लियामेंट में, थोड़ी बहुत प्राइसेस ऊपर गई तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता था। प्रैक्टिकली एवरी सेशन मुझे इस इशू पर जवाब देना पड़ता था और हम डिस्कशन को कभी ना नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जिस तरह से संजय राउत ने आरोप किए थे उसके ऊपर, क्या महाराष्ट्र सरकार ईडी के अधिकारी की चौकसी कर सकती है एसआईटी के बारे में? मुझे मालूम नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कदम उठाया ऐसी न्यूज़ मैंने आज अखबार में पढ़ी, जाने के बाद पूछेंगे। yesterday you met Nitin Gadkari, everyone is a bit curious like I think yesterday there was a 75 to 80 MLAs from all parties. They are here for training, and some of them requested me that they will be happy if I spare time for meeting. So instead of just meeting, I invited for dinner. So they suggested there are lots of issues regarding roads and others. So in that connection, Gadkari's presence will be very useful to us. That was the request of the MLAs. That's why I requested Mr. Gadkari, and I must say he accepted. He spent lots of time, he discussed and gave patient hearing to all MLAs, and I hope he will try to resolve his problems. चलिए, थैंक यू। रास्ता ज़्यादा जल्दी खाली करिए, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस प्रेसिडेंट इज कमिंग। यस ना।